Alaikum, my name is Nurul Saeed. I think यहाँ पे Annie Saeed नजर आता है, लेकिन my name is Nurul Saeed and I've been with the education industry for the past almost 20 years now. Today I'm here to tell you all about an insightful review of the Fitzroy Readers. So this is about the Fitzroy Readers, which is a complete literacy program. As you can see कि यहाँ पे आपको काफी readers नजर आ रहे हैं जो इनके 1 till 60 हैं. अच्छा जी, I'm going to tell you about the Fitzroy method. It is thoroughly school tested and it has been there since the past many years, और ये ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुआ था. Again, this program proceeds in small, easy steps. Progression होती है हर चीज में. It supports accurate spelling, as you know कि ये a phonetic approach है, so it supports accurate spelling as well. It is a self-motivating and a complete literacy program. I'll tell you the philosophy behind the Fitzroy program. Since all of you know that English has an alphabet of 26 letters. जब हम इन letters को use करते हैं, तो we write the sounds as we speak. Learning which letters to write for the sounds we speak. Sometimes we use only one letter for a sound or sometimes 2 or more letters. I'm sure जितने भी यहाँ पे school owners बैठे हुए हैं, जितने भी educationists बैठे हुए हैं, they all know कि जब हम छोटे बच्चों को start कराते हैं, we usually start with sounds. We don't directly, जैसे हमारे वक्त में होता था, we used to start with A, B, C, D, but now things have changed. और वो start होता है अब with sounds, phonics के साथ, जिनको हम कहते हैं. ठीक है, so this series actually focuses on that. ये per letter, per sound के साथ चलता रहता है आपकी series ऊपर. अच्छा, this program, the Fitzroy one, it is a complete phonics literacy resource, and there are 9 sets of 10 sequential readers which form the basis of the program. Then there are word skill books, workbooks, which have activities that focused on each new digraph or sound introduced in the reader. In work, सारी आपके जो readers हैं, they have an extra workbook जो correspond करती है आपके reader के साथ, which is a very good thing because उसमें आपके readers में focus होता है on the spelling, grammar, comprehension, creative and persuasive English exercises. ठीक है, ये सारी आपकी जो रीडर्स कॉरेस्पॉन्ड अगेन मैं बता रही हूँ कि करेंगे विद योर वर्ड स्किल वर्कबुक्स. अगेन ग्रेजुअल सीक्वेंसिंग इन द रीडर्स. ईच रीडर हैज सीक्वेंसिंग. लाइक आप फर्स्ट रीडर से स्टार्ट करेंगे तो वो एक लेटर से शुरू होगा, सेकेंड से स्टार्ट करेंगे देन इट विल गो on and so forth. ठीक है, reading involves the learning of the rules of spelling and pronunciation, as well as there are exceptions to these rules. The Fitzroy readers teach these rules and the exceptions in a gradual and systematic way, using special stories with a limited vocabulary. Like I said, कि जो आपके Fitzroy readers हैं, वो limited vocabulary के साथ, so that you can focus on those special words जिनसे आपकी gradual sequencing होती जाएगी. Again, I was telling you about कि जब आप बच्चों के साथ start करते हैं अपने schools में, तो you always start with not with A, B, C, D या C, A, T नहीं बताएंगे. In readers पे focus होगा आपका ये phonics पे. Like when you are, for example, there's a word given here, cat, तो आप उनको CAT नहीं कहेंगे cat. It focuses on the sounds. K, act. आप इस तरह letter sounds introduce करेंगे. The readers focus on the sounds again, like I said, कि इसमें sounds के साथ साथ फिर digraphs आ जाएंगे and then हम further on move करेंगे, trigraphs आ जाएंगे. If you can see, there are a few readers given over here. For example, a fat cat से start होगा, फिर big pig, bug on the rug. The first 5 readers जो हैं, उसमें आपके vowels introduce होंगे, which is your A, E, I, O, U, जिसको आप sounds के साथ ही करेंगे, a, I, O, A. Right? अच्छा, I'm going to tell you थोड़ी सी information दूंगी इन readers के बारे में. The first reader, a fat cat, जो इनका first reader है, it uses only 13 letters. Like वो उन letters पे focus करेगा, so that बच्चे की progression जो है ना वहीं से start होगी आपकी. Right? The second one is the first
5 readers, like I said and told you just now, कि each teach one basic vowel sound आपकी focus करेगी. In the readers 1 till 10, special sight words like I and have are generally introduced. आपके readers में इसमें sight words भी आ जाएंगे जो इनको in readers में वो special words कहलाए जाते हैं. Reader 9 teaches the first digraph. As you all know, that digraph is 2 letters, 1 sound. For example, ch, sh, the. These are digraphs. So वो reader 9 में जाके आपके introduce होते हैं. See the progression that is given कि आपकी first से आपके vowels focus होंगे and then taking on the child reaches blending वाली side पे चला जाएगा जहाँ पे वो digraph introduce हो जाएंगे. Readers 11 to 20 only introduce only one digraph. उसमें भी बच्चे की progression होगी because he'll be learning blending as well. All new sounds and special words जो हम तो इनको in readers में special words कहते हैं, वैसे वो आप sight words भी होते हैं. They're also called tricky words. Learned in the context of the story. Every reader has a story. ठीक है. Readers 21 till 40 further expand on digraphs with long vowel sounds. इसमें ऊ, ई, वो वाली आपके digraphs आना शुरू हो जाएंगे long vowel sounds के साथ. The difference between the name of a letter and basic vowel sound of a letter must be clear to the students. अच्छा, ये the difference between the name of a letter and the basic sound. For example, if you are telling them it's cat, C-A-T, तो आप उनको साथ साथ sounds भी बताएंगे, ख, act. ठीक है. At the beginner stage, we explain this by showing a picture of a cat to the student. The student will say, this is an example that I'm given. The student will say that, you know, it is a cat. And you can ask the student that what sound does a cat make? Meow. So that's the sound. Is program में there are exceptions as well. Like I said that there are exceptions. आप लोगों को इसका ये pages first page हैं, ये first 2 pages हैं, ये भी side पे नजर आ रहे होंगे. उसमें there are special words or sight words that are incorporated into the readers. Her story में, her reader में, there are, you know, words we know that are given. The old sound is given, and then the special words that should be introduced are also given. First 2 page पे. If you can see on your right, तो इसमें जो words we know है, like जो बच्चों को पहले से पता होंगे, वो those words will be. इसमें ये मतलब नहीं है कि बच्चे को अगर नहीं आ रहा तो आप उसको revise नहीं करवाएंगे. You can always go through the ये vocabulary so that the child is aware कि हाँ हमने ये कर चुके हैं. And the parents also know because आप readers घर भेजते हैं, so the parents also know, you know, they are doing this, the child is doing this. So which is a very very good thing in this reader. Usually readers में ये चीजें नहीं दी हुई होती. They are mostly questions given कि आप ये question पूछें, ये question पूछें, ये question पूछें. ठीक है. For sight words, again, the instruction is very clear that they have given, look through the story, find and say each special word. Now you're ready to read the story. So that this level is making the child an independent reader, जो कि आपके further आना शुरू हो जाएगी चीज. ठीक है. The Fitzroy Readers contain the 50 most common special words and many words which together with the basic sounds and digraphs enable to students to read written English. हमारा basically aim ये होता है to make a student an independent reader and independent learner. Next slide है जी आपकी. These are the word skills workbooks. These are the Fitzroy Readers and the word skill workbooks which I spoke about as well and which I told you about कि ये आपकी correspond करती हैं with your readers. So we have Fitzroy word skill books number 1, number 2, number 3, number 4. And आपकी each workbook contains a number of sequential worksheets that relate to each reader. The A sheets, इसमें A, B करके दिए. The A sheets concentrate on new sound taught in the reader and the B sheets reinforce the special words. This is something that I found really nice in these readers because usually readers के साथ they're just I've seen other reading programs as well. They don't have these word skill books जिसमें आपकी सारी चीजें cover होती हैं, grammar के aspect से, spelling के aspect से, वो चीजें नहीं होती. So this is something that I really liked about this reading series. After you have completed the A and B sheets, prior to starting the corresponding reader, provides ideal preparation for the student. मतलब आपकी student की हर चीज हो रही है, उसमें आपकी grammar
आपकी डिक्टेशन भी हो रही है, आपकी वर्कशीट्स भी हो रही हैं. So this is very helpful to the student. The remaining worksheets focus on punctuation, grammar, comprehension, creative and persuasive writing. तो side by side आपकी reading भी हो रही है और आपकी बाकी ये काम भी हो रहे हैं. So this is an ideal series for the children. अच्छा, अभी आगे मैं आपको और मजे की चीज दिखाऊंगी कि इन रीडर्स के साथ रीडर्स, तो देर आर रीडर्स, बट अगेन देर इज अनदर फन thing for the children to play. The back cover of each reader introduces the new sound and special words that are taught in that reader. For example, this is the reader 5. ये देखें, इसमें new sound भी दी हुई है, as in hen, and special words are given. And this is given at the back cover of each book. Okay, then we have the Fitzroy alphabet book. These are all the readers that are given. These readers go from 1 till 60. Aapki alphabet book jo preparatory foundation year hai, which is an interesting book as well, bachon ke liye. And then you start with the readers and skill book, which go till 60. Ye aapka ek pack hai jisme 5 books hai aapki. अच्छा, अभी मैं आपको जिस चीज का कह रही थी कि ये अल्फाबेट बुक ये है जिसमें आपकी साउंडिंग, रिकग्नाइजिंग, राइटिंग, इसकी बहुत मजे मजे की वर्कशीट्स हैं और इसी में आपकी रिव्यू भी है बीच में, विच इज वेरी इंटरैक्टिव फॉर द किड्स. इट्स वेरी कलरफुल, इंटरैक्टिव, ब्लैक एंड व्हाइट है, कलरिंग है, मैचिंग है, सो इट हैज वेरीड एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन. इसके की फीचर्स, अगेन ये जो मैं आपको कह रही थी मजे की एक चीज है जिसमें आप बच्चों से साउंड्स पूछ सकते हैं. दिस इज ऑल्सो रिव्यू. द अल्फाबेट चार्ट इज गिवन. इफ यू कैन सी द की फीचर्स ऑफ दिस रीडर इज मैचिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, रूफ एंड बॉटम लेटर्स आ जाते हैं, डॉट टू डॉट, फ्री राइटिंग, लेबलिंग प्रैक्टिसेस, वर्ड फॉर्मेशन. सो प्रीटी मच everything is given in one book rather than having a lot of books. Alphabet बुक जो है इनकी वो आपको हेल्प करेगी कि जिसमें एक ही बुक में everything is given. Then for the children, we have a word making flashcards base game. This I've played with my own son as well, and this we have played with a few teachers as well, and they loved it. Is game ka naam hai Alphabetics. It is also available in all Jahangir book depot branches as well. The game comprises of a set of 115 cards which show English letters, digraphs, trigraphs, consonants and vowels. अच्छा, अब आप लोग जब इसको शुरू करेंगे तो वो according to your level शुरू करेंगे. You just can't start it right away. आप according to your level start करेंगे. जब आपको ये गेम मिलेगी और जब आप इसको खेलेंगे तो there are rules given in the game और हर रूल को आप फॉलो करते करते बहुत मजे की ये गेम होती है अगर आप अपने बच्चों के साथ खेलें. आपको मैं लेवल बता देती हूँ इसके. देर आर लेवल नंबर corresponds to the reader number, so that difficulty level can be easily adjusted. Play only with the cards you want, but again one thing I would like to suggest here is कि एक दफा ये आप खुद अपनी टीचर्स के साथ खेलें and then start playing with the children. This is a very interesting game. Again, 4 card types have different colors. Children learn to choose the ones they need. All the explanation is given in the game. हर चीज आपकी mentioned है. Each and every one scoring कैसी है, कैसी नहीं है, क्या करना है, आपने hear and spell करना है, see and say करना है. So everything is laminated. Instruction manuals are given in the game box. ठीक है. अच्छा, वी हैव सैम्पलर बुक्स एज वेल जिसमें आपकी सैम्पल वर्कशीट्स हैं फ्रॉम द अल्फाबेट बुक and the 7 word skills books. So if you want, आप इसको भी पहले try कर सकते हैं, but my suggestion would be कि ये amazing reading program है which works wonders for the kids क्योंकि इसके साथ correspond करती हैं आपकी workbooks which is a very good thing और आप इससे end कर सकते हैं game खेल के जो alphabetics है. ठीक है. Thank you for your time and listening. And now, if you have any questions regarding to the Fitzroy Readers, I'm here and I can answer. Thank you. अगर थोड़ा सा इसका जो प्रोग्रेशन का जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 60 तक, अगर थोड़ा सा उसको हम एनलाइट कर दें तो जरा अच्छा हो जाएगा.
जी थैंक यू फवाद साहब। जो आपका जो प्रोग्रेशन है ना, वो आपको मैंने शुरू में बताया है कि आपके उससे स्टार्ट होता है फर्स्ट वाउल से, A E I O U से। उसी तरह आपका प्रोग्रेशन आपके डायग्राफ्स तक जाता है, जो कि 2 लेटर्स एंड 1 साउंड के साथ होती है। और इसी तरह वो बच्चों को ब्लेंडिंग आना शुरू हो जाती है। जब ब्लेंडिंग आना शुरू हो जाती है तो आप उसकी वर्ड स्किल वर्कबुक्स के साथ जो उसमें वर्कशीट्स दी हुई हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंगली आप वो कर सकते हैं। सो आपकी बच्चे की प्रोग्रेशन ग्रामर के साथ भी होती है। और अच्छा, इसके साथ एक और भी चीज है कि आपको हर जब आप एंड करेंगे ये रीडर, जब आप फिनिश करेंगे तो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग अ डिक्टेशन एज वेल। उसमें वर्ड्स आपकी बुक में मेंशन्ड होते हैं। I wanted to know, are these readers SRM aligned, like they have the NOCs of SRM? Fawaz sir, would you like to answer the question? Sure. Definitely, these are aligned with the SRMs, and we have got the NSC from almost all the boards of Pakistan. And it is mentioned, it is written on each and every reader that these are aligned with the SRMs, which is defined by the PCTB and the other boards. Okay, thank you so much.